पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज आसिम मुनीर के नाम। वैसे तो जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक सियासी जो उनका रूप है उस पे रोज बात होती है, हर जगह होती है। अब कम होने लग गई है क्योंकि इसका बड़ा पुशबैक आया है उनके दफ्तर से, उनके इदारे से। मगर उनकी एक और भी नौकरी है और उस नौकरी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। ये पाकिस्तान में जो 3 सर्विस चीफ्स हैं उसमें सबसे पावरफुल ओहदा ये है। एंड इनफैक्ट अगर जॉइंट चीफ को भी मिलाएं तो फिर भी जॉइंट चीफ से भी ज्यादा, हालांकि टेक्निकली जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं जनरल साहिर, टेक्निकली इनके बॉस हैं, वो भी 4 स्टार हैं। मगर ये बिकॉज ऑफ द शेयर पावर ऑफ द आर्मी, ये डी फैक्टो इफ नॉट डिजोरे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे पावरफुल आदमी है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो नॉन, आप कह सकते हैं गैर सिक्योरिटी, नॉन सिक्योरिटी इश्यूज में, मतलब सियासत में भी सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। मगर आज हम इनकी जो जो इनकी जो डे जॉब है, जो सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, फौजदारी जिसे कहते हैं, आज उस पे जोर दे रहे हैं क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट विजिट किया है इन्होंने। वीकेंड पे, छुट्टियों वाले दिन विजिट किया है। इसका मतलब है कि फौज छुट्टी पे नहीं सोती और आसिम मुनीर भी छुट्टी पे नहीं सोता। सैटरडे और संडे को ये ईरान गए हैं, रास्ते में क्वेटा में रुके हैं। ईरान में क्यों गए हैं, क्वेटा में क्यों रुके हैं? क्वेटा में ऑब्वियसली इसलिए रुके हैं क्योंकि क्वेटा में जो बलूचिस्तान में जो टीजेपी टीटीपी की जो लड़ाई हुई है, हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी सही नहीं है, खराब होती जा रही है। अफगानिस्तान की तरफ से लोग आए हैं, वेपनाइजेशन बहुत हो रही है, थिंग्स आर गेटिंग इंक्रीजिंगली अनस्टेबल। पिछले दिनों में मैंने इस पे व्लॉग किया है। मगर ईरान आसिम मुनीर क्यों गया है? दिस इज द थ्रस्ट ऑफ टुडे। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत पेचीदा सवाल है। ईरान के साथ पाकिस्तान की अजीब सी रिलेशनशिप पिछले 75 सालों में रही है। शाह के दौर में बड़े क्लोज थे ये दोनों, फिर रेवोल्यूशन के बाद खुमैनी साहब के दौर में जब पाकिस्तान फर्मली सऊदी कैंप में चला गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जिहाद करने लग गया सऊदियों और अमेरिकन के साथ, तो सऊदी और अमेरिकन दोनों ईरान के ऑफ कोर्स जाने माने दुश्मन हैं पुराने। सो उस हिसाब से इट बिकेम अ वेरी स्ट्रेंज रिलेशनशिप। बहुत लंबा बॉर्डर है दोनों का साथ। ईरानी ज्यादातर शिया हैं, पाकिस्तानी ज्यादातर सुन्नी हैं, मगर फिर भी 30-40 साल की दोस्ती थी। इस्लाम जो है दोनों ममालिक का ग़ज़ो-ए है। दोनों जो हैं अपने आप को कंसिडर करते हैं, इस्लाम का बाप कंसिडर करते हैं। they both consider themselves as Islamic and Islamist states. तो उस हिसाब से ये ना दुश्मनी थी, ना ये दोस्ती थी, ना ये दोस्ती थी, ना ये दुश्मनी थी। मगर अब आसिम मुनीर साहब की जो पिछले 48 घंटे गुजरे हैं उसमें काफी क्लियर कुछ चीजें होने लग गई हैं और अगले दिनों में जो चीजें होंगी उन पे आज का ये महाज है। पहले तो ये मिले किससे हैं? ये ईरानी जो सिविलियन लीडर्स हैं उनसे नहीं मिले, ये ईरानी फौजी लीडर से मिले हैं। एक तो जो ईरान का आप कह सकते हैं सबसे जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी है, जनरल सलामी, जो आईआरजीसी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के जो कमांडर हैं, जनरल सलामी से ये मिले हैं। आईआरजीसी क्या है? आईआरजीसी बेसिकली आप कह सकते हैं कि आईएसआई ऑन स्टेरॉइड्स है। इनके पास कंट्रोल है पूरी ईरान की आर्म फोर्सेस का। इनके पास सियासी बहुत सारी पावर्स हैं, और ऑफ कोर्स जो ईरान के जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं वो भी आईआरजीसी वगैरह देखते हैं। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जैसे आईएसआई पाकिस्तान में बहुत पावरफुल है, फौज तो है, बड़ा इदारा फौज है, मगर द आईएसआई रियली होल्ड्स द की टू द किंगडम। वैसे ही आईआरजीसी के कमांडर और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ दस्तावेजात, कुछ प्रेस रिलीजेस उधर से निकली हैं, जो मैं आपको मुख्तसरन पढ़ के सुनाता हूं। और फिर अपने जो इनके जो काउंटर पार्ट हैं, जो रेगुलर आर्म फोर्सेस के चीफ हैं जनरल बाकिरी, उनसे भी मिले हैं। मगर पहले आईआरजीसी से शुरू करते हैं कि आईआरजीसी के कमांडर ने जब मिले वो जनरल आसिम मुनीर से, उन्होंने क्या क्या कहा। एक तो उन्होंने ऑब्वियसली बात की कि मुसलमानों को डिवाइड किया जा रहा है, द डेंजरस पॉलिसी ऑफ द हेजेमोनिक सिस्टम विद द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ब्लडी डिविजन्स अमंग्स्ट मुस्लिम्स। और ये जो बॉर्डर पे जो मसले हैं ये उस पे प्ले आउट हो रहे हैं। एक तो ये बोला, और जो बॉर्डर है
वो कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं ये कॉमन बॉर्डर पे। तो ये बोला, फिर ये बोला कि the IRGC is prepared to work in cooperation with the Pakistani army to change the security conditions at the border between the two countries and turn them into economic borders। ये बहुत significant बात बोली है IRGC के कमांडर ने। फिर से बोलूंगा, IRGC का कमांडर ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं फौजी होता है, और उन्होंने बोला है कि एक तो बॉर्डर को स्टेबलाइज करना है, दूसरा इसको इकोनॉमिक बॉर्डर बनाना है, इकोनॉमिकली खोलना है, तिजारत खोलनी है, लड़ाई कम करनी है। अभी हम और आते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि वी कंसिडर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एज आवर सिक्योरिटी। बहुत बड़ी बात है। और ये जो इजरायली अखबार हैं उन्होंने स्पेशली ये बहुत उठाया है, जेरूसलम पोस्ट वगैरह ने भी ये बात उठाई है कि वी कंसिडर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एज आवर ओन सिक्योरिटी। वी विल टर्मिनेट द टेररिस्ट ग्रुप्स बाय प्रमोटिंग इंटरैक्शन, कोऑपरेशन एंड जॉइंट एक्शन एंड सिनर्जी। पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है, ये बोल गया है IRGC का कमांडर, विच इज अ वेरी वेरी बिग डील। फिर लेट्स पिवट टू के दूसरी साइड क्या देख रही है। अब आपको पता है, हर एक को पता है, बच्चे बच्चे को पता है पूरी दुनिया में कि इजराइल और ईरान की बनती नहीं है। ये दोनों स्वॉन एनिमीज हैं और एक दूसरे की ऐसी तैसी करते रहते हैं जब भी इनको वक्त मिलता है। अब इजराइल के बारे में जो इजरायली प्रेस के ने जिस तरीके से इसे कवर किया, एक तो इजरायली प्रेस ने बड़ा इंटरेस्टिंगली कवर किया कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसले हैं, सच एज टेंशंस विद इट्स फॉर्मर लीडर इमरान खान, टेरर एंड एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट्स। तो बेसिकली इजरायली कह रहे हैं कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फौज को 3 मसले हैं, इमरान खान, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कौन पढ़ रहा है? इजरायली खुद पढ़ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी बिग डील कि इजरायली समझते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान एक थ्रेट है एस्टैब्लिशमेंट को, दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म के साथ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट। फिर ये इंपॉर्टेंटली इजरायली प्रेस कवर करता है कि पाकिस्तान प्रेज्ड कासिम सुलेमानी। पाकिस्तान प्रेज्ड कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी कौन है? आपको याद होगा सदर ट्रंप के जमाने में कासिम सुलेमानी IRGC के पिछले कमांडर थे और उनको कत्ल कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। सदर ट्रंप के जमाने में एक ड्रोन अटैक हुआ था और कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया गया था। उसके बाद क्लियर हो गया था कि कोई अमेरिका का कोई पीस अमन मुआहिदा कुछ नहीं है ईरान के साथ, जो सदर ओबामा के जमाने में पीस टॉक्स हुई थी, और अमेरिका ने अपने हाथ साफ किए ईरान से, और ईरान ने भी कहा बच्चू मैं तुम्हें देखूंगा। तो उस हिसाब से जो IRGC है, बाय द वे IRGC को अमेरिका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइज करता है। तो दिस इज अ वेरी बिग डील। इवन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आज अगर जो अलग अलग जो दहशतगर्द तंजीमें हैं दुनिया की, उनमें से अमेरिका अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन लॉ, द IRGC इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अगर वैसे देखें तो आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी बड़ा क्लियर एक सिग्नल दिया है कि IRGC के कमांडर के साथ जाके इन्होंने चाय बिस्किट खाए हैं। तो इट्स अ वेरी बिग डील कि ये हुआ है। ये बहुत बड़ी, आप जो कहते हैं ना कि आप अमेरिका के ये हैं और अमेरिका के वो हैं, बहुत हमारे जो तज्जिया निगार हैं वो कहते हैं इस वक्त जो पिवट हो रहा है पाकिस्तान, जिस आप कह सकते हैं एक अजीब किस्म की सिचुएशन में है कि ना अमेरिका से दोस्ती हो सकती है, ना हिंदुस्तान से दुश्मनी ज्यादा की जा सकती है, सस्टेनेबल नहीं है। तो पाकिस्तान एक बीच में एक नया रोल कार्व कर रहा है, एक नीश कार्व कर रहा है, जिसमें चाइना भी है, ईरान भी है, शायद हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं तो तिजारत भी है वगैरह। तो ये जो सब सवाल हैं, बाय द वे ये बहुत अहम सवाल हैं, और आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका आप 2-4 मिनट इंतजार करें, वो भी आज हमें इन सवालों के बारे में बताएंगे। मगर द फैक्ट इज कि इजरायली कवर कर रहे हैं, जेरूसलम पोस्ट जो एक कंजर्वेटिव पेपर है, कह रहा है कि जो हमारा दुश्मन था, जिसको हमने और अमरीकियों ने, ऑब्वियसली इसमें इजरायली इन्वॉल्वमेंट भी इस पे बहुत लिखा गया है कि कितनी थी, कि जो हमारे दुश्मन को, जिसने कासिम सुलेमानी को, जिसको हमने कत्ल किया या अमरीकियों ने चलें कत्ल किया, उसको पाकिस्तान उसकी तारीफ कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिखा है the remarks by Pakistan clearly illustrate how they tend to be anti-Western but prefer relations with countries like Iran.
تو اسرائیل نے تو کلیئر کر دیا ہے. تو بہت عرصے سے کافی کلیئرٹی کافی وہ ہو رہی تھی کہ بھئی ہم ایران کے ساتھ گیمز کھیل رہے ہیں اور پھر اسرائیل کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں. کیا ہے جنرل عاصم منیر کے اس دورے نے کم از کم اسرائیلی ورلڈ ویو میں کلیئر کر دیا ہے. اسرائیل کے بہت بڑے اخبار نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اینٹی ویسٹرن ہے اور وہ ایران کے ساتھ دوستی کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے بمقابلہ ویسٹ. تو یہ بات ہوتی ہے سلیمان جو جنرل سلامی ہیں جو IRGC کے کمانڈر ہیں ان کے ساتھ. پھر یہ ملتے ہیں جنرل باقری سے. جنرل باقری نے obviously یہ ذرا سی زیادہ فارمل تھی کیونکہ یہ جو انٹیلیجنس والے ہیں یہ کم بولتے ہیں کم بتاتے ہیں تو ہمیں کم خبریں نکلی ہیں ادھر سے. مگر جو جنرل باقری ہیں انہوں نے بہت لمبا پھرا دیا. ایک تو انفارچونیٹلی خود بھی اب اپنے آپ کو میجر جنرل کہتے ہیں. ان کا جو بڑا جنرل ہوتا ہے میجر جنرل ہوتا ہے مگر انہوں نے ہمارے جنرل صاحب کو لیفٹیننٹ جنرل کہہ دیا. اب آپ شاید بہت سارے لوگ اس میں مذاق اڑائیں اس بات کا مگر یہ میرے خیال سے ایک آنےسٹ مسٹیک تھی. جنرل عاصم منیر ایکچولی جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہے. کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں وہ بات چھوڑیں کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل مگر ایرانیوں سے بھی یہی شاید غلطی ہو گئی مگر آئی تھنک اٹ واز این آنےسٹ مسٹیک. ایک تو یہ بڑی جی گلوئنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے بڑے عرصے بعد نکلی اور اسپیشلی ایک آرمی چیف کے اوپر ایسی سٹیٹمنٹ میں نے بہت پاکستانی آرمی چیف ایک پاکستانی کمانڈر کے اوپر میں نے بہت عرصے سے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی. ایک تو ان کو مبارکباد دی کہ جی بہت کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ پہ تھینک یو ویل ڈن شاباش. پھر انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی. کہتے ہیں کہ بلڈنگ اپون دا پازیٹیو پروگرس اچیوڈ ان دا پاسٹ. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بلڈنگ اپون دا پازیٹیو پروگرس اچیوڈ ان دا پاسٹ کہ جب یہ DGMI اور DGISI تھے جب ہی ان کی شاید ملاقات ہوئی ہو پہلے پاسٹ میں. obviously جب یہ فورس کمانڈر ناردرن ایریا تھے یا کور کمانڈر تھے جو بھی تھے اس وقت تو obviously اس وقت تو کام نہیں ہوتا کہ باہر کی پاور سے انٹریکٹ کرنا. تو یہ انٹرسٹنگلی یہ ریفر کر رہے ہیں کہ جب آپ پچھلے آپ کے ٹینیور میں جب آپ 3 سٹار تھے یا 2 سٹار تھے تو اس وقت بھی آپ نے پازیٹیو چیزیں کی تھیں. تو دس میکس عاصم منیر اے ویری انٹرسٹنگ کیریکٹر. یہ روپ ہم نے عاصم منیر کا پہلے نہیں دیکھا کہ ایرانیوں کے ساتھ ہم نے کچھ عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر جو ہے وہ عربسٹ ہے. بالکل ہے. عاصم منیر نے UAE میں سعودی عربیہ میں بہت ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے پرسنل ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے پروفیشنل ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے. بریگیڈ ادھر کمانڈ کی ہوئی ہے. DGMI جب تھے اس وقت جو اقامہ شکامہ تھا ادھر سے سیکیور کیا ہوا ہے. جب 3 سٹار لگے ہیں تو جا کے فیملی ٹائم ادھر سپینڈ کیا ہوا ہے. تو عاصم منیر has spent a lot of time in the Arab world. مگر یہ انٹرسٹنگ ایک بریچ ہے. عاصم منیر کا ایک یہ نیا روپ نکلا ہے اس میٹنگ کے بعد کیونکہ جو ایرانی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھی ماضی میں بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. اور بار بار ایرانیوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. بائی دا وے ان کی جو ایرانی جو پریس ہے وہ بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے کیونکہ سب سٹیٹ رن ہے ادھر میڈیا کو انڈیپینڈنٹ میڈیا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ پازیٹیو بیک گراؤنڈ آف جنرل منیر ان دا آرم فورسز آف پاکستان ہائی لائٹ کیا ہے انہوں نے. پھر کہتے ہیں کہ میجر جنرل باقری ایمفسائز دا امپورٹنس آف ایران اینڈ پاکستان ان دا اسلامک ورلڈ. ایک تو یہ وہی میں جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں اپنے آپ کو اسلامی پاورز سمجھتے ہیں. اب یہ مجھ سے بہتر طریقے سے ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا پلے آؤٹ کیا ہے. مگر یہ بہت لمبا آرک ہے. ان کی دوستی کل پرسوں نہیں ہوئی مگر کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں. obviously اسی کے بعد مینشن کرنے کی ضرورت تھی. انہوں نے کیا ہے کہ جو ڈیسیکریشن ہوئی ہے قرآن کی جو بے حرمتی ہوئی ہے سویڈن میں اس کے بارے میں بولا. مگر اگین بولا کیسے؟ ایرانی سٹائل میں بولا کہ referring to the recent act of desecration of the Quran in Sweden, he highlighted, مطلب یہ جو جنرل صاحب ہیں جنرل باقری, he highlighted the challenges faced by the Islamic world due to global arrogance. مطلب کہ جو ایک غرور جو ہے دنیا کا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. پھر بہت امپورٹنٹ بات کی اس بات پہ ابھی تک بائی دا وے پاکستانیوں نے یہ وے ان نہیں کیا کیونکہ میں پھر سے ایک بار اب چیک کر لیتا ہوں کہ کچھ اس پہ ISPR نے کچھ بولا کیونکہ ISPR بہت بزی ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ISPR کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. یہ بس 2 دن پرانی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں نکالی. آپ پڑھ سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کہ بھئی جو ہمارا بندہ ہے باس ہے وہ 2 دن کے لیے جا رہا ہے اور 2 دن بعد آئے گا.
इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा. बट कमिंग बैक, ये जो मुद्दा है ये बड़ा अहम है, क्योंकि ये ईरानियों ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज के जरिए, न्यूज एजेंसी के जरिए बोला है कि he also pointed out to the declining power of the United States in the Western world, noting the shifting global power axis towards Asia and the East, and suggesting that the future of the world will be different from the past. मुस्तकबिल दुनिया का माजी से अलग होगा. अमेरिका जो है वो जवाल पजीर है, मगरिब जो है वो जवाल पजीर है, ग्लोबल पावर एक्सेस एशिया और ईस्ट की तरफ आ रहा है. इसका मतलब वाज़ेह है कि चाइना जो है वो एक नई पावर बन रहा है, और इस बेसिस पे दुनिया जो है वो बदल रही है. और स्पेशली जो गरूर है मगरबी पावर्स का, वो उनकी वीकनेस और डेस्परेशन शो कर रहा है. बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है. पाकिस्तान और ईरान के फौजी कमांडर्स ने बैठ के ये बातें की हैं. ये बहुत सियासी बातें हैं, ये जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट बातें हैं, और they shouldn't be taken lightly. अक्सर हम भूल जाते हैं परवेज खटक ने कौन से एमपीए से मिला और जहांगीर तरीन के घर पे शहबाज शरीफ क्यों गया. ये छोटी मोटी जो लोकल पॉलिटिक्स की बातें हैं, आई एम श्योर ये मिर्च मसाले वाली बातें इंटरेस्टिंग हैं, मगर आपके साथ जब आप एक्सपैंड करते हैं, जूम आउट करते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि गेम क्या चल रहा है. अफगानिस्तान के बारे में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और अगेन द वेरी फैक्ट कि ईरानियों ने इस पे वे इन कर दिया है, पाकिस्तानियों ने कोई तरदीद नहीं की है, गोज ऑन टू से कि पाकिस्तान अब क्या सिग्नलिंग कर रहा है अमेरिका को. क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा कि पाकिस्तान काफी हद तक चुप था. अमेरिका ने जो जबान इस्तेमाल की पाकिस्तान के लिए, जब मोदी साहब इधर आए, जो इस पे हमने बहुत एक दो शो भी किए, कि जिस तरीके से पाकिस्तान को फिर से डू मोर और फिंगर पॉइंटिंग करना अमेरिका ने शुरू कर दिया है. तो अब पाकिस्तानी ने क्या किया, पाकिस्तानी जाके बैठे ईरानियों के साथ, और ईरानियों ने एक स्टेटमेंट निकाली. उसमें कहा है, और सुन लें, कि Bakri considered the occupation of Afghanistan by the United States and their irresponsible withdrawal as a significant issue impacting the security of both Iran and Afghanistan. Irresponsible withdrawal, गैर जिम्मेदार तरीके से अमेरिका निकला है अफगानिस्तान से, और वो अब हमें, ईरान को और पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है. ये जुबान मैंने कम अज कम, अगर आपने देखी होगी तो देखी होगी, मैंने ये जुबान एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ और ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स के दरमियान ये जुबान मैंने पहले नहीं देखी. सो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. इट्स वेरी स्ट्रेंज कि पाकिस्तानी मीडिया, ऑब्वियसली इट्स नॉट स्ट्रेंज, इट्स यूजुअल, कि पाकिस्तानी मीडिया के मुंह पे ताला लगा हुआ है. वो तो, उनको तो छोड़ दें, उनका आप माफ कर दें, उनको कहें कि कोई कुकिंग शो, ये जो सब है, ये जो दुपट्टे वाली आंटियां हैं और मूंछों वाले जो अंकल हैं, जो सुर्खी और टाई लगा के बैठ जाते हैं रोज टीवी पे, इनको आप माफ कर दें. बिकॉज इनसे कोई कुकिंग शो करवाएं या कोई क्रिकेट शो करवाएं, वो उस पर ये शायद बात कर सकते हैं. मगर जो मुझे बार बार, मैं जिस चीज से अब मैं वो होने लग गया हूं थोड़ा सा, कि ISPR क्यों नहीं वे इन करता, जब इतना ईरान की तरफ से इतना इंपॉर्टेंट प्रेस निकला है, इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एक विजिट हुआ है, तो ISPR क्यों नहीं बोल रहा है, ये ना फॉरेन ऑफिस कुछ बोल रहा है. सो इट्स वेरी स्ट्रेंज टू सी दिस. बट शो को एक्सपैंड करते हैं, इसको इस इश्यू के बीच में घुसते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. दो वीक स्टेट्स हैं, दोनों में इंटरनल मसले हैं, दोनों के ऊपर बैनुल अक़वामी प्रेशर है, दोनों के यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के अंदर इंसर्जेंसीज हैं, दोनों की इकोनॉमी सही नहीं है, दोनों अपने आप को इस्लाम का बाप कहते हैं, दोनों कहते हैं कि हम इस्लामिक पावर्स हैं, दोनों ने इस्लामिस्ट ग्रुप्स को दुनिया में अलग अलग तरीकों से, इजराइल में, ईरान, अपना इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में यूज किया हुआ है. तो एक तो ये फिर एक जियो सेक्टेरियनिज्म भी है, एक शिया सुन्नी मसला भी है, जो ईरान बमुकाबला सऊदी अरब बमुकाबला पाकिस्तान बमुकाबला जो भी है, एक तो ये भी चक्कर है इनका. अफगानिस्तान का भी इनका चक्कर है. अब आजकल सऊदीज के साथ डील तो हुई है, मगर वो डील कब तक चलेगी, कैसी चलेगी, स्पेशली जब एक बंदा उड़ान पे हो जैसे सऊदी हैं, और एक बंदा जो है वो डिक्लाइन कर रहा हो जैसे ईरानी है, जैसे हम भी हैं आजकल. तो अफगानिस्तान कॉमन अमूर है, सऊदी कॉमन अमूर है. जैसे हम अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझते हैं, अपना बैकयार्ड समझते हैं, गेस व्हाट, ये भी अफगानिस्तान को अपना
छोटा भाई देखते हैं। ये हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में पठान बहुत हैं, पश्तो बोलते हैं, ठीक है, मगर अफगानिस्तान में दरी भी बोली जाती है जो इनकी जुबान है की वेरिएशन है फारसी की। तो आप खाली अफगानिस्तान को आपने अपने बाप की प्रॉपर्टी समझा हुआ है, जो एक तनकीद होती है आप पे कि आपने स्ट्रेटेजिक डेप बनाया हुआ है, इसलिए वो भी आपको, अफगानी भी आपको हेट करते हैं, मगर ईरान के भी हिस्टोरिक राइट्स हैं ओवर अफगानिस्तान। और फिर ऑफ कोर्स बलोचिस्तान, आपका बलोचिस्तान इनके बलोचिस्तान से लगता है, यस, ईरान का भी एक बलोचिस्तान है, सिस्तान बलोचिस्तान, जो ये उन्हें बैलोच कहते हैं, तो इनका भी, और उधर भी लड़ाई लगी हुई है, खाली आपके बलोचिस्तान में नहीं लगी हुई। शायद यही कॉमन इश्यूज हैं जिनकी वजह से आज आपके जो कमांडर हैं, 2 दिन उन्होंने, जब आपने छुट्टी की हुई थी तो ना हमने छुट्टी की और ना आपके आर्मी चीफ ने छुट्टी की, मगर समझते हैं कि इस बंदे के बारे में जो कम लोग जानते हैं, ज्यादा लोग समझते नहीं है आसिम मुनीर को। कोई कहता है कि ये जिया पार्ट 2 है, कोई कहता है कि ये नवाज शरीफ का बंदा है, कोई कहता है जो भी है, मगर we're not going to waste our time with that. Let's just concentrate now कि जनरल आसिम मुनीर IRGC के कमांडर और ईरान के अपने काउंटर पार्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से क्यों मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। मेरे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वॉशिंगटन में हैं, उन्होंने मुझे खास टाइम दिया है, पुराने मेरे दोस्त हैं, वे मोर लर्नड देन मी। उनसे बात करते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों जो अजीब व गरीब आधे पौने भाई आधे पौने दुश्मन, क्योंकि देखें ना, एक दूसरे की इंसर्जेंसीज भी इन्होंने कंट्रोल तो नहीं मगर थोड़ी सी पुश की हुई है। पाकिस्तान ने भी उधर से लोग पार करवाता रहा है इनटू द इंसर्जेंसी, और वो भी पाकिस्तान में हरकतें करते रहे हैं। इसमें ये बहुत लंबी कहानी है, मगर ये क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो। स्टे ट्यून्ड and enjoy this special weekend podcast. So it's time to pivot to Washington, D.C., where I am with my friend and colleague, Kamran Bukhari, Senior Director of Eurasian Security and Prosperity Portfolio at the New Line Institute, who, by the way, is a fellow fan of trucks. And I've heard he's getting one soon because he's out in the country. Kamran, how are you? What's happening? Good morning. Good morning, Mujahid. Thanks for having me. All right. So thank you. So firstly, thank you for doing this on the weekend. But if the commander of the IRGC and the army chief can meet on the weekend, then you and I can meet on a Sunday morning as well. So bahut shukriya. Thank you. Work never stops. All right. So tell me, speaking of that, why are these guys meeting? What is the profile of this person that Asim Munir has met? Is this usual for the army chief to go alone, especially just 6-8 months into his tenure, and do this? Give us a little background on how you're seeing this. So quickly going through 1, 2, and 3, the 3 questions you've asked. So number 1, look, it makes sense, a lot of sense for these 2 countries and their military commanders to be meeting like that. Look, it's no secret, in Pakistan Army calls the shots. In Iran, it's the Islamic Revolutionary Guards Corps, of which Major General Bakri represents. He comes from the IRGC, but currently, or for the past several years, he's held a position at the apex of the military structure of Iran. Iran has 2 parallel military forces, the Islamic Revolutionary Guards Corps, which is, despite its smaller size, has a disproportionate amount of influence. They are they control everything from telecommunications to the oil sector to the military industrial complex. And as of 2009, they were given the lead by Supreme Leader Ayatollah Khamenei to take the lead on domestic security. So these are like 2 counterparts meeting. Although General Bakri is the Joint Staff Commander, meaning he holds the position that is above both the Artesh, the regular armed forces, and the IRGC. Though he comes from the IRGC, and it's not surprising that someone from the IRGC is holding that position. The Artesh is numerically far superior, in the sense that they are like 500,000 some strong, whereas the IRGC is like 200,000 or somewhere in that neighborhood.
But nonetheless, the IRGC has a disproportionate amount of influence. And to give your viewers and listeners a heads up or a sneak preview, look, when Khamenei is no more, he's 80 some years old, his health is not doing well, he's going to be, he's not going to be around for long. So that's going to be a pivot point, an inflection point in Iranian politics. And the IRGC is going to basically increasingly take over overtly a lot of the day-to-day control. And the next supreme leader is going to be a puppet of the guards, as opposed to the guards being subservient to the top cleric. Now, going back to question 2, look, both countries are going through a very, very difficult moment in their history. Iran is under sanctions. Iran faces a huge domestic political economic crisis. And Iran, this regime, as I said, is an evolutionary regime change mode. And therefore, it's at a critical time. It needs to make sure that all its various regions are in check. And the region that borders Pakistan, which is the Sistan và Balochistan province of Iran, borders Pakistani Balochistan. And likewise, Pakistan, and I'm not going to go into the details, everybody knows this is Pakistan's weakest moment historically. There are no shortage of crises. So it makes sense for these two guys to size each other up and sort of say, hey, we both have problems. We don't see eye to eye. Pakistan is close to the United States, is close to Saudi Arabia. Iran is opposed to both. And therefore, there's a reason to meet and to discuss and to manage and see what we can do. Mind you that, over the years, both sides have provided room for the others' Baloch rebels. Baloch rebels who are Sunni ethnically opposed to the Iranian state. There are Baloch rebels that have historically opposed the Pakistani state, and they both have sanctuary on each other's territory, and with that murky nexus called Taliban-run Afghanistan as sort of that triangular battle space. Do you think, on that note, firstly, excellent. Wow, what a start to this interview. You've given me so many areas to fire off at. But first of all, just some quick follow-ups. Kamran, जो आपने definition दी है IRGC की, they sound like a compound of what the ISI does, which is a smaller force having outsized power versus the larger conventional force. But obviously, they seem to have a larger ambit. एक तो मुझे ऐसा लगने लग गया है, which makes sense for the army chief to meet Bakeri. But what's also interesting is at this point, both the ceremony as well as the timing. Ceremony-wise, जो मुझे समझ आती है, वो ये है कि is it usual for an army chief to just sit on hop on a Learjet alone and just do this? Have we seen this in living memory in the recent past? Army chiefs अक्सर 6 or 8 months अकेले ईरान नहीं जाते. And that brings us to the other bit, which is, does this have to do with Afghanistan and what's happening? Because all of a sudden the Taliban have emerged. Usually Pakistan and Iran played their weird passive-aggressive games. हम इनके rebels को sustain करते थे with a little bit of an American wink and a nod. They used to try to, push back with their own support for the BLA and other segments. But yet there was this Islami bhaichara, we're sort of part of the whole larger fraternity, etc. It seems that now there's a third spoiler in the mix, which is the Afghans, who are playing their own games, and the Taliban are not mere spoilers, they are the Taliban. So does that matter at this point? Does the timing matter? No, absolutely it matters. And I just want to point out that I actually predicted this in a piece for Foreign Affairs a little over a year ago. I wrote on how Pakistan and Iran have to come to terms with one another in terms of their competition,
coordination, cooperation vis-a-vis Taliban-run Afghanistan. Look, even if the Taliban were not in the mix, between Pakistan and Iran, those are the two countries that have the most influence in, Iran and Pakistan in Afghanistan. Iran, the influence stems from sort of, the linguistic, cultural links. Farsi and Dari are sister languages, or almost like, you couldn't tell, unless you were a native speaker, you couldn't tell the difference apart. There is that cross-border Pashtun ethnicity on both sides of the Durand line. So obviously, and the other states are too small and historically have been disconnected from Afghanistan. So these are the two countries that have to figure out how Afghanistan is going to be managed. And right now, Pakistan faces a major problem from Afghanistan, because Afghanistan is a sanctuary not just for TTP, but now we're increasingly getting evidence that it's also sanctuary for the Baloch. There's a sanctuary for the Baloch, as we just mentioned, in Iran as well. The Iranians, you're muted. I must thank you for saying Baloch and not Balochi, by the way, which is a common mistake so many analysts make. So thank you. Well done, sir. Yeah, and the Iranian pronunciation is Baloch. Ah, good to know. Good to know. So, so these guys, Pakistan has a problem in Afghanistan. Pakistan has larger problem with Iran as well. Look, Iran seeks nuclear weapons. Pakistan is a nuclear weapon state. It is not in Pakistan's interest to have another nuclear weapon state on its western flank. There's India, there's China. China's an ally, but that's also a factor. The other thing is Iran and Pakistan can do lots of trade. There's a lot of oil and gas that can be potentially imported from Iran, but for the sanctions, and that's a huge arrestor in the path of the two countries working together on trade, especially energy cooperation, which is, God knows Pakistan needs energy, and God knows that the Iranians need to make money because they're so sanctioned. But what stands in between are the sanctions led by the United States. So there's a lot of reason for these two countries to talk. But right now, I think that it's internal security that is driving these conversations. And for General Munir to hop on a plane and go there so early on in his term, and yes, it was pre-scheduled, but nonetheless, when something gets pre-scheduled or scheduled in advance, there has to be some burning issue that has driven the two sides to say, hey, we need to meet and meet soon. And I think that they are meeting because of Afghanistan, because of the mutual concern for cross-border Baloch, or let's call it tri-border Baloch activity, rebel activity. So there's a lot to talk about, but I think primarily is how are these countries going to deal with Afghanistan? Afghanistan, while the Iranians have influence and they have some of their people, Iran leading Taliban in the cabinet, in the interim setup, but the Iranians are also having border issues with the Taliban, and there's fighting going on along that border as well. So there's a lot that the two need to talk about. Can they solve problems? I really doubt it at this early on, but they need to get the conversation going. That's very interesting. It's also worth mentioning that the army chief made a pit stop in Quetta, which is the home of the 12th Corps, Southern Command, as well as the epicenter of recent terror attacks, both by Baloch as well as TTP insurgents. So while security does bring them together, Kamran, I want you to, in these last few minutes, I want you to expand on the bigger picture here. These two weak states, these two middle powers, with some sort of ambition, are driven together as well as divided. But the one bit I want to concentrate on is what drives them together. And there's a larger cluster, there's a larger grouping which is being formed under the umbrella of the Chinese. Now, this meeting, it's worth mentioning, this meeting comes about a month after the Chinese, the Iranians and the Pakistanis held their first CT conference, their first counter-terrorism conference in Beijing. Not a usual grouping of chaps to meet.
but they did meet. And after that, soon after that, we saw, by the way, that guy came right after the Chinese had met the Afghan foreign minister in Pakistan. So that Pakistan is playing a very important bridging role in this region right now because of its understanding of Afghanistan. But soon after that, the Indian, I'm sorry, it would be a cold day in hell if the Indians proposed this. The Iranian naval chief, the Shahram Irani, Rear Admiral Shahram Irani, he proposed an Indian Ocean Naval Alliance. Quite a long name for an organization which he says should include Bahrain, Saudi, the Emiratis, the Pakistanis, and the Indians for collective maritime security. So Iran is playing its own little game of trying to club its friends together. The Pakistanis are playing their own little game of trying to club its friends together. They both converge with China. We've got a couple of minutes on the clock. What do you think? So that's a great question. Look, first of all, the Iranians have long been trying to alter the security architecture of not just the Persian Gulf, but the Arabian Sea and the broader Indian Ocean basin. The problem is they don't have the capacity to do that. Yes, there's a lot of port calls by the Iranian Navy. By the way, there's a division of labor when it comes to naval power between the two military forces. So the IRGC is responsible for security in the Persian Gulf, whereas the Artesh Navy, the Navy of the regular armed forces, is responsible for everything, so blue water navigation, to the extent that the Iranians have that capacity. So this isn't, I'm not surprised that the Iranians want to do this, especially now that they have sort of signed that deal that I don't doubt that they really put their faith into it with the Saudis. So they're trying to make the best of a very difficult situation where, look, Russia has tanked because of the Ukraine war, to the point that the Russians are reliant on Iran for, killer drones that they're using in the Ukraine battle space. The Chinese have their own economic and political problems that are constraining them. There's pressure being built by the activity that's taking place in the Western Pacific basin, which means the Chinese have to put pressure somewhere else. They're trying to do that with India and the strategic poking on the Himalayas from, Arunachal Pradesh all the way to Ladakh. But that doesn't solve the Chinese problem. The Chinese need to push back harder. They have Pakistan, that they can rely on to a certain extent. Pakistan's circumstances are such, they need Chinese help more than the Chinese can get help from the Pakistanis. The same thing with the Iranians. Now, somehow the Chinese can work these two things together, Iran and Pakistan. Then, they could get something going and play a much bigger role and project influence. Pakistan and Iran, from a Chinese point of view, are two nodes that are sort of stretching into the Eurasian or Central Asian push on the part of the Chinese. They know that if these two countries are the ones that have the most influence, from the Chinese point of view, Pakistan and Iran sort of represent two critical structures or nodes in their look west or Central Asia or Eurasia strategy. CPEC is obvious, Pakistan's value is obvious from CPEC. A few months before the Taliban took over Afghanistan, the Chinese announced I think it was in March of 2021, when then Iranian Foreign Minister, Mr. Javad Zarif, and Mr. Wang Yi, who was at the time and still is the Chinese top diplomat, they met together. They announced something called like a $400 billion 25-year project to connect the BRI into Iran and down into the Persian Gulf. That sort of tells you, the value that the Chinese place. But the problem is both states are troubled, and in between those two states, you have Afghanistan as well. So things aren't looking good for the Chinese. They are not, into the game of deploying multi-divisional forces and basically doing the heavy lifting for security beyond their borders. And so that's a conundrum, that's a challenge for the Chinese, but in principle, that's how they view, these two countries
that are sort of on, in between them. There you have Afghanistan as well. But I want to add one more thing from the Iranian point of view, which is that, look, when they're dealing with Pakistan, that's not the only border that they have to worry about. Because of what has happened in the South Caucasus between Azerbaijan and Armenia in Nagorno-Karabakh as of 2020, which Azerbaijan now has the upper hand, and Azerbaijan and Iran are adversaries, and therefore Iran now has to look at that northern flank with trepidation. I wrote a piece a few years ago on the coming, Turkish-Iranian confrontation, and Turkey is an ally of the Azeris, and therefore the Iranians are looking at that border, and that border is important because ethnic Azeris inside Iran, who are Iranian citizens, make up 25% of the population. That's the largest minority in Iran. Wow. And then Baloch are also not much smaller, but they're in. So that's the northwest. This is the southeast. Wow. So when China is sort of trying to do all these things, the Iranians look at this and say, "Hey, we'd love to do that, but we got to figure out these security issues at a time when our state is the weakest in the 40 some odd years that the Islamic Republic of Iran has been in existence." Wow. That really puts it in perspective, Kamran Bukhari, because it's interesting that if you take the layman's long view of Pakistan vis-a-vis Iran, the usual kicks in, right? Oh, there are Islamic brothers, blah, blah, blah. But on the whole, by and large, both sides have been playing their little games, either in the Sistan-Balochistan border or via Afghanistan. They've been proxying and needling each other. But especially this argument that the Northwest versus the Southeast are ridden by minorities, the Azeris over there, who Pakistan has a connection with. The Pakistani military trains the Azerbaijani military, and Pakistan is very close, increasingly close, with not just the Azeris but the Turks as well. So that Pakistan plays an interesting role on that border, I would say, and definitely with the Balochistan aspect. So keeping this weird passive-aggressive relationship these two have, and it going back all the way to the 70s, 60s, 70s, and even the 80s, when there was a Pakistani general or two who wanted to share Pakistan's nuclear program with the Iranians. Remember that? Remember those good old days? So premised on that, in the Shah and the post-Shah era, the attachment has been an estranged one. So where do you see that estrangement go now? Clearly, the Pakistanis and the Iranians aren't to each other, which the Iranians and the Saudis are. Let's just be very honest. So it's not as confrontational as that relationship. That wo kya kehte hain, Arab-Ajam situation is not happening. But something similar is happening. It's not well templated. Explain that to us, and let's wrap this baby up. So look, both countries, in their sort of national identity, in their ideological narrative at the national scale, there's a heavy dose of Islam. In Islam, not just domestic politically, but the two countries have used Islam and Islamism, separate things. Important distinction. Foreign policy, as instruments of foreign policy power projection. The Iranians have done it largely in the Arab world, Hezbollah, then the Iraqi groups, and then the Shiite militias that they mobilize in Syria to support the regime of President Assad, and then more recently the Houthis in Yemen, and likewise, Pakistan has used Islamist proxies vis-a-vis India, Kashmir, Taliban. Is like that. We don't need to say much about it. Everybody knows about it. So both states have sort of their idealism in terms of how they would like to be, but the reality is we live in a world where what you want and what you can have are two very different things. Trust me, I know, buddy. Trust me, I know.
So the Pakistanis and the Iranians are caught in that, and so yes, there's this brotherhood and whatnot, but let's be honest. First of all, there's the geosectarian divide, but more importantly, all entities are national entities. There is, Iranian nationalism, is that pragmatic, safe space for the Iranians to operate in, and sort of when they climb down from that big mountain of, whatever pan-Islamist brotherhood, and same for Pakistan. At the end of the day, I mean, the Pakistanis can't get along with the Taliban, who were their former proxies. So what does that say for, having relations with Iran? The Iranians look at Pakistan, as an ally of the Saudis and weak enough to where the Saudis can have their way, and an ally of the United States and dependent on the United States. So what's their game? Their game is to sort of kind of say, hey, the common denominator here are the Chinese. We're going to work with the Chinese more so because we can't rely on Russia anymore, and we really don't have too many friends. And so the Pakistanis are close to the Chinese. Can we get some sort of like a working relationship so we can manage this? At the end of the day, look, Iran is an anomaly if you look at it in a 360-degree angle. It's a Persian state bordering the Arab world and bordering the Turkic world. I'm talking about Central Asia, including Turkey. They have a border with Turkey as well. And then they have Southwest Asia, which is Afghanistan, Pakistan. So that makes for a very, some scholars have called it, being geopolitically lonely. And then you add in the I like that. And therefore, what is the strategy of the Iranians? The Iranian strategy is, look, we need to defend ourselves now more so than ever before, because we're now at our weakest moment. What can we get going with the Pakistanis? We can't trust them fully, but short of, something called trust, something as huge as trust, can we get something going? Are there commonalities that, can bring us together? And what kind of, strategic purchase can we derive from that? Kamran Bukhari of the New Line Institute. I couldn't have spent a better Sunday morning, my friend. Thank you. Thank you so much for your time. This is what I understood. I understood that these are both complicated countries. They're both troubled. They're both middle powers, which are going through a pretty weak transition right now. They both have a lot of internal issues like insurgencies. They have clearly they have economic complications. Besides the insurgencies and the economics, of course, they both have a serious reputation problem, a pretty big one. Nobody likes these guys. Nobody in the neighborhood likes these guys, but they kind of like each other, and yet they don't. And yet there's some sort of forward movement that can be made under the larger umbrella of that great People's Republic of China to thrust towards an economic push into Eurasia. I think that is the thesis, Professor, of what I understand. Do correct me if I'm wrong, but offline. Gaaliyan dena to mujhe offline WhatsApp pe dena, right? But overall, thanks, Kamran. Thanks for your time today. My pleasure. And I hope to see you in DC soon, my friend. Likewise.